Sorting material into groups. We saw objects around us. We saw that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stone, and many other objects. All these objects have different shape, color, and uses. Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If you include objects that are nearly round, our list could also include like apples or an earthen pitchers. We were looking for objects that are edible. We might include all the items we have listed in table 1.1, 1.2, and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in group. We might also find some of the round shaped objects we just listed out are also in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic, buckets, lunch boxes, toys, water, container, pipes, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are made from. बहुत सारे एग्जांपल जिसमें क्या होता है हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या किए क्लासीफाई किए उसका शेप पे या फिर मटेरियल पे या कौन सा मटेरियल से बना हुआ है उसका आकार साइज कैसा लंबा है चौड़ा है चार रेक्टेंगल है क्या है. All objects around us are made up of one or more material. These material may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud or soil. Sorry. जितना भी ऑब्जेक्ट है सभी किससे बना हुआ है ग्लास मेटल प्लास्टिक वुड कॉटन पेपर मड और सॉइल से बना हुआ है. कैन यू थिंक ऑफ मोर कॉम एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल. एक्टिविटी 1. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some every day object from home, and we could also collect some objects from the classroom or from the outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, a wall, trees, door, tractor, roads. Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. This way, we have divided all objects into two groups. One group has objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are made from these materials. Similarly, that are not made from this material, we could separate things that are used for preparing food. यानी कि हम लोग जो क्लासरूम में डोर्स ट्रीज या ट्रैक्टर रोड के बारे में बात किए तो उसमें से हम कुछ ऐसा मटेरियल्स को क्लासीफाई करना है जो किससे बना हुआ हो पेपर से या फिर वुड से और जो अलग क्लासीफाई करना है किसको जो उस सब चीज़ से मटेरियल से नहीं बना हुआ है. Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the material that each one is made up of. It would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friend, teacher, and parents to identify the material, objects, and the material they are made up of. जैसे plate materials किससे बना हुआ है plate? Steel, glass, plastic, any other material, pen, plastic or metals.
Activity 2. Table 4.2 list some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of every objects you know that are mainly of this material. List them in column 2. यहाँ पे देखते हैं. Bhuja wants to know whether we found some material that were used for making more than one type of objects. Different types of object that are made from the same material, यानी कि अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट जो किससे सेम मटेरियल से बना हुआ है. वुड. वुड मटेरियल किससे बना हुआ है? सेम मटेरियल से. चेयर, टेबल, प्लग, ब्लॉक, कार्ट एंड इट्स व्हील. पेपर, बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर. लेदर में क्या हो गया? बेल्ट हो गया. लेदर में क्या हो जाता है? गन कवर होता है. लेदर में क्या हो जाता है? बैग होता है एंड मैनी मोर. प्लास्टिक में क्या होता है? प्लास्टिक में जो टॉयज होता है. प्लास्टिक में डस्टबिन होता है. प्लास्टिक में क्या होता है? डस्टबिन हो गया, टॉय हो गया. प्लास्टिक में और भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे मग हो गया, जग हो गया, कॉटन जैसे क्लॉथ्स हो गया. So what do we find from this table? First, we group objects in many different ways. We then found that objects around us are made up of different material. At times, an object is made up of a single material. An object could also be made up of many material. An object क्या बहुत सा material से बना हुआ हो सकता है. And then again, one material could be used for making many objects. और उसी के साथ एक material बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आएगा. What decide which material should be used for making any given object? तो क्या डिसाइड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को कौन सा मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए या कौन सा मटेरियल चाहिए? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल. इससे पहले हम लोग को अलग अलग डिफरेंट मटेरियल को और उसका प्रॉपर्टी को जानना चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट made with a piece of cloth? Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3, and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. यानी कि हम लोग टम्बलर को कब इस्तेमाल करते हैं? जब लिक्विड को रखते हैं. अगर हम क्या करेंगे, कोई कपड़ा रखेंगे तो वो कपड़ा गीला हो जाएगा, वहाँ से लिक्विड निकल जाएगा. Therefore it could not would it not be silly if we were to make tumbler out of the clothes? What we need to be tumbler is glass, plastic, metal, or such material that we hold water. Similarly, it not wise to use paper like material for cooking. ठीक उसी तरह पेपर लाइक मटेरियल कुकिंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कुकिंग मटेरियल के लिए अगर यूज़ करेंगे इतना पतला होता है वो जल सकता है. We see then that we chooses a material to make an object depending on its properties and purpose for the which the object is to be used. हम लोग क्या देखते हैं? that we choose a material यूज करते हैं to make an object. को ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टीज पे क्या डिपेंड करता है, और पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट किस काम के लिए इस्तेमाल किया होना चाहिए. So, what are all the properties of material that would be important for their uses? Some properties are discussed here. Appearance यानी कि materials का properties उसकी खूबी क्या है? Adjective बोलते हैं उसको. Materials usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminum. At the same time, so there may be some similarities between the iron, copper and aluminum that are not there in the wood. यानी कि मटेरियल्स जो होता है एक दूसरे से बहुत डिफर करता है. जैसे वुड होता है क्या, आयरन, कॉपर, अल्मोनियम से डिफर करता है. बहरहाल आयरन, कॉपर, अल्मोनियम खुद एक तीसरे से डिफर करता है, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ हो सकता है किसके? आयरन, कॉपर और अल्मोनियम का, जो किसमें हो? वुड में बिल्कुल भी नहीं होगा. अब एक्टिविटीज़ 3 को देखते हैं. कलेक्ट सम पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, अल्मोनियम शीट, चॉक. डू एनी ऑफ दिस अपियर शाइनी? क्या इसमें से कोई शाइनी दिखता है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप. शाइनी मटेरियल को क्या करते हैं? ग्रुप्स में रखते हैं.
Now observe as the teacher cuts material into pieces and looks at the freshly cut surface. What do you notice? क्या notice करते हो? Does the freshly cut surface of some of this material appear shiny? Includes these object also in the group of shiny material. Do you know? Do you notice such a sign or luster in the other material? Cut them any way you can. Repeat this in the class with many material as possible and make a list of those with or without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of the material with a sandpaper to see if it is luster. Cutting piece of material to see if they have luster. यानी कि कटिंग करते हैं देखने के लिए क्या वो luster है या नहीं है. Materials that have such luster are usually metals. यानी कि materials जिसके पास luster होता है वो generally metal होता है, चमकता है जो. And copper, aluminum and gold are example of metals. Some metal often lose their shine and appear dull. कुछ मेटल क्या करता है अपना साइन को खो देता है और धब्बा देखने लगता है, ख़राब देखने लगता है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. हवा और मॉइस्चर के ऊपर आ जाता है, किस पे? मेटल पे आता है, जिसके कारण वो डल दिखता है. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. हम लोग जब freshly cut surface देखते हैं वहाँ पे luster देखते हैं. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for a freshly cut surface of metal to see if they are luster. अगर हम क्या करते हैं, आयरन स्मिथ को लुक देखते हैं या आपको वर्कशॉप, फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल टू सी इफ दे आर लचर, क्या वो लचर है या नहीं. Hardness. When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress, while others may be easily compressed. यानी कि जब हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं अलग अलग मटेरियल को अपना हैंड से, कुछ हार्ड होता है, कुछ इजीली कंप्रेस होता है. टेक ए मेटल की, एक मेटल की लेते हैं एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट, और कुछ से कोई सब्सटेंस उसको स्क्रैच करने का कोशिश करते हैं. The surface of the piece of wood, aluminum, a piece of stone, nail, candle, chalk and any other material or object, कोई भी ऑब्जेक्ट से यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल, तुम अच्छे से स्क्रैच कर सकते हो कुछ मटेरियल. while some cannot be scratched so easily, कुछ जल्दी स्क्रैच नहीं कर सकते. materials which can be compressed or scratched easily are called soft. यानी कि जो materials को हम easily खरोच सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, soft बोलते हैं. while some other material which are difficult to compress are called hard. For example, cotton or sponge is a soft while iron is a hard. cotton और sponge क्या है, soft है, iron क्या है, hard है. In appearance, material can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? यानी कि materials के पास अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे luster मतलब शाइनी हो गया, हार्डनेस होता है बहुत हार्ड, रफ हो गया, अजीब टाइप लगेगा, दरदरा टाइप, या फिर स्मूथ प्लेन. क्या materials का और भी प्रॉपर्टीज होता है? कैन यू इमेजिन? soluble or insoluble. Activity 4. Collect sample of some solid substance such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Take 5 glasses or beaker. Fill each one of them about 2/3 with water. Add a small amount of a spoonful of sugar to the first glass, salt to the second glass, and similarly add a small amount to the other substance into the other glass. Stir the content of each of them with a spoon. Wait for a minute. Observe what happened to the substance added to water. Note your observation as shown in figure. यानी कि एक एक्टिविटी करने वाला जिसमें क्या होता है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस जैसे हो गया शुगर, चीनी हो गया, नमक हो गया, या फिर कोई चॉक पाउडर या फिर बालू. ठीक उसी तरह में क्या करते हैं, 5 ग्लास लें या फिर कोई बीकर लें, सब में क्या दें, फिल कर दें 2/3 ऑफ वाटर. 2/3 ऑफ वाटर का जितना भी हम मटेरियल ये सब में फिल कर दें, और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ
मतलब कोई भी बीकर में 2/3 वाटर भर दें और स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर डाल दें पहला में, दूसरा में सॉल्ट डाल दें, ठीक उसी तरह तीसरा में क्या डाल दें, अदर सब्सटेंस जो जो यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। स्टिर द कंटेंट, सबको घोलेंगे किससे, चम्मच से, कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होता है उस सब्सटेंस पे जिसपे हम वाटर में जो एडेड किए। नोट योर ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्वेशन करने बोलता है। क्या कुछ डिसअपियर हो जाता है या फिर कुछ दिखाई देता है सब्सटेंस जिसमें वाटर में मिक्स किए। तो यहाँ पे क्या बोलता है, सॉल्ट सब्सटेंस है जिसमें डिसअपियर इन वाटर, डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। सॉल्ट क्या होता है, कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है वाटर में। ठीक उसी तरह शुगर क्या होता है, शुगर भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है वाटर में। सैंड नहीं होता है, चॉक पाउडर नहीं होता, सॉडस्ट नहीं होता, क्योंकि ये घुलता नहीं, मिक्स नहीं होता। You will notice that some substances completely disappeared or dissolve in water. You say that these substances are soluble in water. यानी कि जो completely soluble हो जाता है, dissolve हो जाता है वाटर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कि सब्सटेंस क्या सोल्यूबल है वाटर में। अदर सब्सटेंस डोंट मिक्स विद वाटर, अदर सब्सटेंस जो वाटर के साथ मिक्स नहीं करता है, एंड डोंट डिसअपियर, और वो गायब भी नहीं होता। इवन इफ यू स्टर फॉर ए आवर, समझे, लॉन्ग टाइम, तो सब्सटेंस इनसोल्यूबल नहीं आता, वो सब्सटेंस बाद क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, जल्दी घुलता ही नहीं है। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। वाटर क्या है, हम लोग का बॉडी को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है, बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। ये क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है। दो लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, क्वेश्चन अराइजेस, यू हैव टू फाइंड द आंसर एंड मेंशन इन कमेंट सेक्शन। Now activity 5, collect sample of vinegar, lemon juice, mustard oil and coconut oil, kerosene or any other liquid. Take a glass tumbler, fill it up to a half with water. Add a few spoonful of one liquid to this and stir it well. Let it stand for a 5 minutes. Observe whether the liquid mixed with water. Repeat the same with other liquid, as many different liquid as are available to you. Write your observation. Liquid vinegar mixes well. You will search on the net and find the answer. Lemon juice mixes or not. Mustard oil, coconut oil, kerosene. Some liquid mix well with water while some not. We notice that some liquid get completely mixed with water, some other don't mix with water and form a separate layer when kept aside for some times. हम लोग क्या नोटिस करते हैं, कुछ वाटर के साथ फुल्ली मिक्स हो जाता है और कुछ मिक्स नहीं होता है और सेपरेट लेयर फॉर्म करता है। Buzo suggests that we also check that if a liquid that we used in activity 5 mix well with some water, some liquid with other than water. Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water. Some gases are soluble in water, while others are not. Water usually has small quantities of some gases dissolve in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animal and plant life lives in water. And the plants that lives in water. यानी कि बोलते हैं कुछ गैसेस होता है, मोस्टली गैसेस पहले वाटर के साथ डिजल्व नहीं होता, लेकिन कुछ गैसेस जो होता है वाटर के साथ हमेशा डिजल्व रहता है, तो कुछ थोड़ा क्वांटिटीज़ में रहता है, जैसे ऑक्सीजन हमेशा वाटर के साथ डिजल्व रहता है। और क्या करता है, सर्वाइवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल का सर्वाइवल, एनिमल को ज़िंदा और प्लांट को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। Object may float or sink in water. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water. You have also noticed that this with some solids in activity 5. Some of these material that don't mix with water floated to the water
or floated to the surface of water. Other may have sunk to the bottom of the tumbler. You notice many example of objects that float in water. Many example of that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond. A stone that you throw on this pond. Few drops of honey that you let fall into the glass of water. What happened to all of these? Buzo would like you to give him five examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing the same material to see if they float or sink in other liquid? Transparency. You might have played the game of hide and seek. यानी कि तुम लुका छुपे तो गेम बचपन में खेले ही होगे. Think of some place where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? क्या तुम कभी कोशिश करते हो जो ग्लास होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके पीछे छुप जाएं? नहीं ना, क्योंकि उसमें तुमको दिखाई पड़ेगा. Obviously not, as your friend can see through that and spot you. Can you see through all the material? Those materials or materials through which things can be seen are called transparent. Glass, water, air, and some plastic are example of transparent material. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatable transparent container of glass, plastic so that the buyer can easily see these items. Take. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a card box, carton, or a metal container. Wood, cardboard, and a metal are example of opaque material. यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें तुम देख नहीं सकती हो. समझे स्टूडेंट्स? तुम अंदर का मटेरियल कौन चीज़ रखा हुआ है, क्या है, नहीं देख सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपेक बोलेंगे. जैसे वुडन का हो गया, कोई भी मेटल का हो गया, उसको क्या बोलेंगे? ऑपेक मटेरियल बोलेंगे, ऑपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे. Do you find that we can group all the material and object without any confusion as either opaque or transparent? हम लोग बिना कन्फ्यूजन के डिफर कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट में कोई भी मटेरियल अंदर का चीज़ दिखाई पड़ता है और ओपेक में दिखाई नहीं देता है. Activity 6. Take a sheet of paper and look through it towards lighted bulb. Make a note of your observation. Now put 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. Of some soil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through the portion of a paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see the clearly through the oil sheet? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The material through which the object can be seen but not clearly is known as translucent. Similarly, the oily patch on paper we tested food items or purgeons of fats that was translucent too. Can you think of some more example of material? यानी कि ट्रांसलूसेंट एक ऐसा मतलब मटेरियल होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को तो देख सकते हैं आर पार लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल में दिया, कोई भी पेपर को हम क्या करेंगे, कोई पेपर रहेगा वहाँ पे कुछ ऑयल डाल देंगे तो ऑयल जो पोर्शन में डालेंगे उससे हल्का आर पार थोड़ा सा दिखाई देगा. जो थोड़ा सा दिखाई देगा उस फेनोमेनन को हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं. We can therefore group material as opaque, transparent, and transmaterial. Pahli suggest covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of your palm. She wants to know whether the palm of your hand is opaque, transparent, or translucent. We learned that material differ in their appearance, and obviously, our hand, if we keep the palm and हम अपना हैंड पे एक तरफ अपना लाइट टॉर्च जलाएंगे और दूसरी तरफ देखेंगे तो क्या होगा?
ट्रांसलूसेंट होगा, कुछ दिखाई हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। ओपेक होगा, ओपेक अगर थोड़ा रोशनी आती है तो क्या होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, लेकिन जनरली क्या होता है, ओपेक, दिखाई नहीं देता। We learned that the material differ in their appearance and the way they mix in water or other liquid. They may float or sink in water and may be transparent, opaque और translucent. यानी कि कोई भी मटेरियल्स हम लोग देखे क्या सकता है, वो फिर वाटर में मिक्स कर सकता है या फिर अदर लिक्विड में मिक्स हो सकता है, वो फ्लोट भी कर सकता है या डूब भी सकता है किस पे, वाटर में, और ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है कोई मटेरियल, ओपेक भी हो सकता है और ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। मटेरियल कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। सिमिलरिटीज और डिफरेंस प्रॉपर्टीज में देखा है। Why do we need to group materials in everyday life? We often group materials for our convenience. At homes, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक साथ रखते हैं। Such an arrangement help you to locate easily, जल्दी पहचान सकते हैं कुछ खोजेंगे तो। Similarly, a grocer usually all types of biscuit at one corner of a shop, also at another. ऑल ग्रेन एंड पल्स आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस। सब कुछ ठीक उसी तरह एक अलग अलग चीज़ों का अलग अलग इंतजाम करके मैंने मतलब अरेंज करके रखता है, ताकि वो चीज़ हमको बिस्किट्स को अलग रखेंगे, तेल को अलग रखेंगे, सोप्स को अलग रखेंगे, ताकि हमको इजीली मिल सके कोई भी चीज़। There is another reason that we find such grouping useful. Dividing material in group make it convenient to study the properties. Dividing materials को कोई ग्रुप में करने से उसका प्रॉपर्टीज़ को इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। We will study more about this sortings of materials in higher classes. तब तक के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप लोग अपना घर में बैठ के कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स, गुड नाइट।